Start. Thus, even the second question is answered against the petitioner's stop. Mr. Jingan, counsel for the petitioner in civil writ petition number 5856 of 2001, raised an additional ground stop. He urged that the wide letter dated 29th November 2000 annexes P2 with the petition, the state government has issued instruction to the quasi-judicial authorities that they have to consider the case for assessment and levy of sales tax in the light of the decision in Virumal's case supra-stop. He submitted that the action of the authority in giving directions to quasi-judicial tribunals is illegal and untenable. Stop. It is undoubtedly correct that the discretion vested by law in a statutory authority cannot be controlled by the issue of administrative instructions. Stop. However, in the present case, the attention of the authorities has been invited only to the decision of the jurisdiction court. Stop. The view taken by a bench of this court is binding on every tribunal functioning within the state. Stop. Thus, it cannot be said that merely by bringing the decision to the notice of the authorities, the state government has cabined, controlled, or confined their discretion. Stop. No other point was raised. Stop. In view of the above, we hold that stop. The purchase of paddy by the petitioners in these cases is not exempt from the levy of tax. Stop. The case does not fall within the parameters of Section 5 of the Central Act and 12 of the State Act. Stop. The petitioners have an effective alternative remedy under the provisions of the Haryana General Sales Tax Act in so far as the challenge of the orders of assessment, etc. is concerned. Stop. They are relegated to the remedy under the statute. Stop. The instruction issued by the authority wide letter dated 29th November 2000 suffer from the infirmity of law so as to call for any interference by this court. Stop. The writ petitions are accordingly dismissed subject to the condition that the petitioners will be entitled to file appeal against the order of assessment. Stop. In the circumstances of these cases, we make no order as to cost. Stop. Held that the High Court has the jurisdiction to determine the question as to whether the state government had the jurisdiction to make the reference at all. Stop. The facts in the present case touching on the question of jurisdiction are not in dispute. Stop. Therefore, it would not involve adjudication of any complicated dispute on facts which would be better left to be determined by the tribunal labor court. Stop. In the given facts of a particular case, the matter may well be left by the High Court to be determined by the tribunal labor court to which the reference is made. Stop. In the present case, the facts on issue of jurisdiction being undisputed, the High Court will be well within its jurisdiction to render a decision on the point of jurisdiction under Article 226, 227 of the Constitution of India. Stop. Further held that the workman last worked for the petitioner
at Bombay. Stop. It is not pleaded anywhere that the petitioner has any establishment within the territorial jurisdiction of the Union Territory Chandigarh and that the respondent workman even worked there. Stop. Therefore, even though a part of cause of action may have arisen to the workmen on receiving the order of dismissal in Chandigarh within the territorial jurisdiction of the UT Chandigarh, it would not be sufficient to establish that a substantial part of the industrial dispute arose within the Union Territory Chandigarh. Stop. Therefore, Union Territory Chandigarh cannot be said to be appropriate government for making the reference to the Labour Code Chandigarh. Stop. The reference made by the Chandigarh Administration Labour Department Chandigarh to the Labour Code cum Industrial Tribunal UT Chandigarh has no jurisdiction to decide the industrial dispute. Stop. हाय स्टूडेंट, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शन आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शंस आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है, आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है। ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट की हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।